Hello बच्चों, let's read the question. Two conducting cylinders of equal length but different radii are connected in series between two heat baths kept at temperature T1 equals to 300 Kelvin and T2 equals to 100 Kelvin as shown in figure. The radius of the bigger cylinder is twice that of the smaller one, and the thermal conductivities of the materials of smaller and larger cylinders are K1 and K2 respectively. The temperature at the junction of the cylinders in the steady state is 200 Kelvin. Then K1 by K2 is. So बच्चों, here our key concept is heat transfer. So rate of heat transfer, that is delta Q upon delta T is equal to AA delta T by D, where delta Q is the amount of heat transfer, delta T is the time interval, K is the conductivity, D is the length, A is the area and delta T is the temperature change. अब बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कुछ पैरामीटर्स गिवन हैं. जो आपका स्मॉलर सिलेंडर है उसका एरिया मान लेते हैं, लेट्स से A1 इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर, और डेल्टा T1 टेम्परेचर चेंज मान लेते हैं उसका, क्योंकि वो है टेम्परेचर T1 और जंक्शन के बीच में, तो T1 माइनस जंक्शन टेम्परेचर. नाउ फॉर बिगर सिलेंडर, लेट्स से जो एरिया है दैट इज पाई R2 स्क्वायर, और डेल्टा T2 विल बी इक्वल टू T2 माइनस टेम्परेचर ऑफ जंक्शन. जो आपका Tj है दैट इज टेम्परेचर ऑफ जंक्शन. जंक्शन का टेम्परेचर आपको गिवन है 200 केल्विन. एंड जो आपका बिगर सिलेंडर है उसका रेडियस इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, और लेंथ दोनों ही सिलेंडर्स का इक्वल है. सो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू K1 एरिया है आपके पास पाई R1 स्क्वायर, और जो टेम्परेचर चेंज है डेल्टा T दैट विल बी T1 माइनस Tj अपॉन लेंथ. सिमिलरली delta Q2 upon delta T is equal to K2 pi R2 square into T2 minus Tj upon L. Now, as system is an insulating material, so इसीलिए कोई भी हीट लॉस नहीं होगा. So that means delta Q1 upon delta T is equal to delta Q2 upon delta T. तो डेल्टा Q1 है आपके पास K1 पाई R1 स्क्वायर इंटू T1 माइनस Tj इज इक्वल टू K2 पाई R2 स्क्वायर Tj minus T2. So K1 pi will get cancelled, R1 square, T1 का वैल्यू है आपके पास 300, Tj is 200 Kelvin, K2 R2 का वैल्यू आपके पास है R2 is equal to 2R1. So 2R1 square, Tj is 200 minus
100. So K1 R1 square 100 is equal to K2 4R1 square into 100. So R1 square will get cancelled, 100 will get cancelled. K1 by K2 is equal to 4 by 1. So our final answer is K1 by K2 is equal to 4. I hope you understood it well. Best of luck.